So what we are going to do today is we are going to have, you might have heard something called something called geometry of relativity. But in geometry of relativity, we just are going to study some of ideas like length contraction, time dilation. Have you heard of these things? What's length contraction and what's time dilation? It's all about measurement of time. जो न्यूटन के कंसेप्ट में हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं थे, एंड इन रिलेटिविटी देयर इज ए ऑल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम. सो एंड इट्स आल्सो हाउ क्लॉक जो ट्रेडिशनल जो हम कहते हैं क्लॉक मीन्स आई यूज वन वर्ड. अगर आप न्यूटन की बुक प्रिंसिपल देखोगे वहाँ डिफिनेशन ऑफ टाइम पर्टिकुलर है. उसमें कहता है टाइम इज समथिंग व्हिच फ्लोज इक्वली at all points in space. जैसे यहाँ पर टाइम मूव होगा, यहाँ पर भी किसी भी जगह टाइम एक ही हर जगह. ठीक है. This notion was somehow with the advent of relativity, it was somehow altered. वहाँ the measurement of time depends on the observer. या observer का individual clock क्या है? So measurement of time depends on from where you are measuring space. So वही है space time. We don't talk of space, we don't talk of time, we talk of space time. अब ये कि how do you come to this notion of that measurement of time depends upon the observer. उसका एक individual clock होता है. So it's a subtle idea. So if in the context of relativity, what we are going to do is we are going to see. इसको हम कहते हैं in physics you might have heard something called dead and current experiment. सुना है? एक वो experiments you are doing in the lab. ठीक है? दूसरा हो गया experiment, thought experiment. You are doing in your mind. बट उसका एक conceptual और logical unity होता है. If you think like this, it should like be this. आप theoretically contradiction पे आ रहे हो. So if you take time as independent of space, the way we talk Newton, तो हमारा कुछ contradiction हो गया. ठीक है? This is the way Einstein came up to the conclusion of time. और people like me, बहुत सारे लोग ने point किया. So the notion of time is not notion of, जैसे उर्दू में है ना, क्या है इसको क्या कहते हैं? ज़मान और ज़मान का. हाँ, मतलब किसको कहते हैं? स्पेस. ज़मान किसको कहते हैं? हाँ, टाइम. तो हमारी लैंग्वेज में है ना, हमारे जो असलाफ पुराने लोग हैं उनकी intrinsically the notion of space and time, they thought space and time together. अब उनको नहीं पता था ये इसको related इसको कहते हैं. ठीक है? They had this intuitive sensibility that space and time cannot be thought separate. ठीक है? तो अब ये है कि for example there is now the notion of relativity of simultaneity. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अब मसला आता है तब जब एक रेफरेंस फ्रेम होता है ना, एक रेस्ट पे होता है, एंड अनदर रेफरेंस फ्रेम इज मूविंग. आप दोनों मेजरमेंट्स कर रहे हैं. एक रेस्ट पे भी मेजरमेंट कर रहा है, कोई इवेंट रजिस्टर कर रहा है. यू आर रजिस्टरिंग सम इवेंट. फॉर एग्जाम्पल यू आर रजिस्टरिंग एन इवेंट. जैसे मैं हम टॉर्च जलाऊंगा, जब या कोई पार्टिकल उस पर गिरेगा तो वहाँ इट विल स्ट्राइक. ठीक है? बट इफ we are a person is registering that event at rest, जैसे ग्राउंड पे मैं गाड़ी में I'm taking two reference frame. One is a moving reference frame and one is at rest frame. अब मैं बॉल को ऐसे कर रहा हूँ. ठीक है? नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है. बट
for me the distance between the जो कितना टाइम लगा उसको बॉल नीचे गिरी एंड इट विल बी 2x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x और वापस ठीक है बट फ्रॉम somebody on the ground उसको क्या लगेगा बट इन द मीन टाइम गाड़ी चल रही है projectile light. in the meantime the bus is moving or the thing is moving so he will register the same event उसका initial point and the final point at some different times at some so उसकी वजह से what that person is going to measure and what this person is going to measure they will not necessarily agree for them to agree you should have some common reference frame, common point or common transformation law जिसको हमने कल पढ़ा था तो Galileo's additional rule था we had to modify it by the another law ये ठीक है for higher velocities because for lower velocities you cannot find those differences got the point so it all is the how you register an event for an observer at rest or for an observer in motion or two observers who are in relative motion who are in it's not as one is a direct one so who are in relative motion so for them to agree on some measurement or registering an event they may or may not necessarily give the same for example something called metric simultaneity for example, if from this point, for example, the event is happening here, so this observer will more or less see the event. For example, यहाँ कोई event हो रहा है ना, अगर light will यहाँ will shine some light, it will take some time, वापस उतना time लगेगा. अगर यहाँ होगा, उतना time लगेगा. So they will more or less register this observer and this observer. At the same time, more or less. इनमें contradiction नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? Because the distance between the two is same, जिसको कहते हैं metric time simultaneity. अब ये है कि अब distance अगर same नहीं हो, ठीक है? तो इसको मैं कहूँ ज़्यादा time यहाँ से यहाँ पर. So the distance is more. ये 1 सेकंड पहले observe करेगा, ये distance ज़्यादा है, observe with some time, the event at a later time. ठीक है so you have to take into consideration that time का factor which या that कितना हो गया that is so in the अगर इसी चीज को कहेंगे if we use the words of what you say two events which are simultaneous in one universal system or not in general or not in general यहाँ बोल मुझे जनरल इस कभी कभार हो भी सकता है जैसे put the distance between two points for two events which are simultaneous in one universal system or not in general simultaneous it looks trivial but deep down अगर इसमें what I was told ये है कि जो relative motion of observers हैं if they are going to record some event so there is genuine the measurements will not match the measurements एक हो गया normal आप simply add करोगे because it's an intuitive notion if you take the time का value हर जगह same it is not dependent upon place you are measuring so you are measuring for example an event happens here for an observer ठीक है ये start यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया तो कोई लाइन क्या कुछ और ये rest
ठीक है. So he has to keep his clock, यहाँ पर जो clock है same इसको value. But now the other observer is moving. ठीक है, ये move कर रहा है. तो इसका क्लॉक यहाँ पर अलग होगा स्टार्ट ऑफ द इवेंट, जैसे यहाँ चीज को देखना है और एंड ऑफ द इवेंट यहाँ चीज देखो. ठीक है. So that will be a different measurement. It's not necessarily matched together. तो इसका मतलब है कि जो इवेंट रजिस्टर कर रहे हैं हर बंद every observer has a measurement of time which depends upon the space place where he is choosing. उसी को हम क्लॉक कहते हैं, इंडिविजुअल क्लॉक कहते हैं या सब्जेक्टिव क्लॉक कहते हैं. एंड टू रिकॉर्ड और रजिस्टर एन इवेंट हैपनिंग, ठीक है, ही विल कंपेयर हिज ओन क्लॉक इनिशियल एंड फाइनल. जो उसका रेफरेंस फ्रेम रिलेटिव होगा, he will have his own clock, depends upon where he is in space, and he will record that event with the initial and final according to his own clock. So their relative may not necessarily on a given measurement. कोई इवेंट को मेजर कर रहे हैं एक, वो जरूरी नहीं वही करेगा. अब मसला आता है कि वो कहेगा फिर क्या बात है, मेजरमेंट एब्सोल्यूट है कि नहीं. ठीक है. So we have to see when two events are measuring events, उनकी measurements different है. They both agree. They disagree on measurements. But if you take their individual clocks, there will not be disagreement. इसका मतलब ये है कि ये should be a way, उसी को Lorentz transformation भी कहते हैं, by which we can we should not lead to contradiction regarding any measurement of an event. ये आपको समझ आएगा कि इसने क्यों ज़्यादा मेजर किया, इसने क्यों कम, दूसरे ने क्यों कम मेजर किया. That discrepancy can be accounted for. This is the point. ठीक है. So this will be more clear by something. इससे एक और चीज़ हम फिक्स करते हैं. सब आपने सुना होगा moving clocks run through. सुना है? So I will just suspend state here. We will show कैसे slow clock. Okay. At long registering at rest and at the same event कोई basically जो reference frame move कर रहा है उसका जो clocks भी हैं they are also moving. We can say they are moving clocks. ठीक है. तो वो कैसे register करते हैं एक event को. ठीक है. So इसका argumentation we will see how it will come out. For example, so the occasion one I just show this. For example, अगर आप वहाँ करोगे simply आप earlier classes हैं, ठीक है. इसको तो B and this is B. You can say, for example, if somebody is here, ठीक है, ये कोई चीज़ मूव कर रहा है, ठीक है, so you are putting ball here, ठीक है, तो यहाँ से जाएगी जब स्टॉप साइड. But since the ball is moving in the meantime, अगर ये रेस्ट पे ये मूव कर रहा है या ये मूव कर रहा है, so ये इवेंट्स है ना, ये पॉइंट it will move shift from this point to this point. For example, मेरे लिए ये पॉइंट एक ही है, somebody in the bus. मगर अगर ये मूव कर रहा है ना यहाँ पर, for the observer on the ground, पहला वाला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे. So you will measure the distance between 2 points differently. You measure one point as it's here. Since the ये train यहाँ से यहाँ move कर रही है, the other point is C. So if you say, for example, जो time interval है हमारा for these two events, we are going to see it like this, for example. So एक तो है कि for the observer यहाँ से यहाँ गया और फिर so the time कितना मेजर किया
It's distance by velocity. है कि नहीं? So it will be what, Shravan? It will be twice BD by C. अगर velocity of light since relativistic effects are manifest more at higher velocities. जो हम कल देखा था. For smaller velocities, Galilean addition rule can be you can just say as an approximation. So that's why we are taking it so both heights speeds are closer to velocity of light. So you are so ball यहाँ से गई और वापस आ गई. अब बॉल को कैसे आप देखिए? आप लाइट के हिसाब से देखते हैं. लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन बॉल, रिफ्लेक्ट होगी. एक बार आप देखिए, दूसरी बार आप देखिए. So you can see it. So this is the time taken by ball. This now the time taken by the meantime is यहाँ से वहाँ गई. So you will take this distance यहाँ से यहाँ तक and this distance and थोड़ा extra distance travel किया. ये हो गया incoming distance. ये होगी फिर वापस आगे डिस्टेंस. ये यहाँ से क्या ही डिस्टेंस है ये, ठीक है? because यहाँ से रेफरेंस फ्रेम इज मूविंग, so maybe it's traveling more distance as compared to the other reference frame. So we will also have this plus this will be given by delta t for another reference frame, for reference frame which is moving. So it will be this plus, so it will be AB plus BC divided by C. So now we are going to use simple Pythagorean theorem. PD square किसके बराबर है? It will be AB square minus AD square, or it will be equal to BC square minus BC square. BD square. The perpendicular square is equal to hypotenuse square minus square. BC square minus BC square. Yeah, it will be this AD square minus AD square. ठीक है? आप देखो यहाँ पर डेल्टा t by t प्राइम किसके बराबर आएगा? So you are measuring an event or registering an event for this reference frame t and delta. इसके लिए ये था कि BD, इसलिए डिस्टेंस में था यहाँ और यहाँ से वापस. इस वाले में जो ऑब्जर्वर इस रेफरेंस फ्रेम में जब मैंने पॉइंट ए को देखा इट्स दिस डिस्टेंस, ठीक है? So it will be delta t by delta t prime को डिवाइड करके इक्वेशन मान लो इनके साथ actually What is leading to AB plus BC? 2BD by AB plus BC. ठीक है? So that's it. So if AD is equal to BC for a particular case, it's a geometrical construction, so you can say it twice BD by twice AD. Okay, BD by AB. or it will be BD के बदले आपको AB square minus AB square minus AD square. हाँ, ठीक है? Divided by AB. ठीक है? So again मैं AB को बाहर निकालूंगा. ये AB यहाँ काट जाएगा, क्योंकि 1 minus AD square by AB square. ठीक है? So AD by AB किसके बराबर आएगा? AD by AB. So it will be basically delta t by delta t prime. So AB by AB कट जाएगा. So delta t by delta t prime will be equal to root of 1 minus AD by b by c square. AD by it will be 1 minus b square by c square. Now this AD by AC. AD by
AD is the horizontal distance. Horizontal distance. Distance traveled at speed v during the time the light traveled this c around hypotenuse. तो AD जो है ना ये distance है along the horizontal. During the time the light travels the distance along C along the hypotenuse. So if it's that way, if this distance is the horizontal distance, इसको इसमें denote किया है B के साथ, इसको denote किया है C के साथ, so we can say AD by AB is basically equal to B square distance. So you can see delta T and delta T prime, or delta T is equal to 1 minus B square by C square into इससे क्या पता चला? देखो आप डेल्टा टी प्राइम है ना, इसका ये न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है? So this factor will be always smaller than this delta t. It can be equal also if it's 1. If it's equal to C, ठीक है? Then it will be 1. If it's not that way, delta t can be equal to, it's always, it can be less than this, or delta t is greater than this. So इसका मतलब है कि जो observer at rest who is resisting an event, for him the clock will move slower as compared to the observer who is observing the event in a moving. इसी से हम ये the same that moving clocks should run slow. Moving clocks should run slow. So in a simple example we can say, to exemplify quantitatively. So if you want forward, so if you see the book, ऐसे इसलिए लिखा है. ये clock A रखा है, इसको clock C रखा है. And he says clock A is equal to clock C. ठीक है? दूसरे केस में जो आप मेजरिंग इवेंट्स यहाँ पर, एक क्लॉक इसका अपना यहाँ पर है, एक क्लॉक इसका अपना वॉटर पहले वाले के लिए क्लॉक दो क्लॉक्स, एक पे वॉटर स्टार्ट ये दूसरे में है क्लॉक यहाँ से जा रहा है यहाँ. The clock is measuring event here and clock is measuring. So by doing this exercise, you will have found that अभी यहाँ से हम क्या करेंगे? That moving clocks are slow. इसी तरह there is something called Lorentz contraction. एक तो ये है कि moving clocks run slower as compared to the rest. अब ये कि length पे भी क्या असर पड़ता है कि नहीं? The simplest case is like this. For example, दो points से board, ये board है यहाँ, ठीक है? So distance between 2 points क्या है board? कुछ है for example, you get a scale और यहाँ ले को बड़ी scale, यहाँ का point minus. So we will subtract the origin from this to this. ठीक है? अब मसला ही अगर मैं अब मूव कर रहा हूँ या बोर्ड मूव कर रहा हूँ, ठीक है? So the movement I am measuring events, तो ये भी कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं ना? या तो मेरे कोऑर्डिनेट ऐसे होने चाहिए कि अगर मेरा origin start यही होगा ना, so it will not, the length will not be same.
if you don't, if I speak, मैं यहाँ ही, ठीक है, रेस्ट या आई एम मूविंग, तो चलो पहले रेस्ट में चलो ठीक है, नाउ आई एम मूविंग या बोर्ड इज मूविंग, ठीक है, सो डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ बोर्ड कैसे आप ऑरिजिन कैसे निकालोगे, बिकॉज ऑरिजिन इज ऑल्सो मूविंग, अगर आप ऑरिजिन को वही रखोगे इन द मीन टाइम बोर्ड यहाँ से वहाँ गया, सो विल मेजर द डिस्टेंस, द लेंथ विल वेरी, सो अगर मैं मूव कर रहा हूँ ऑरिजिन भी मूव कर रहा है, सो यू हैव टू सी द माई मूविंग रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से उसकी ऑरिजिन कहाँ है, यहाँ पर कहाँ है, एंड यू हैव टू रेजिस्टेंस द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू व्हेन जब मैं इसको मूव करके देख रहा हूँ, इधर बोर्ड इज मूविंग, और अगर बोर्ड मूव कर रहा है तो इसका ऑरिजिन फिर ये नहीं, इसको ऑरिजिन है द मोमेंट आई वाज सीइंग बोर्ड कहाँ पहुंचा, वहां पर उसका पॉइंट क्या था, वहां रजिस्टर करना है, एंड उसका एक जो एंड पॉइंट है वहां रजिस्टर, एंड पॉइंट कहाँ पर पहुंचा, देन द टू क्लॉक्स register the units, otherwise it will be simple problem, the major. So in the same way, what we are going to do is now, how we are saying that moving body is equal length है ना, our measurement of length, that will not be same, that will get contracted. अब ये again it's a non-intuitive concept, थोड़ा सा time लगता है filter see what do you mean by that. तो अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अगेन यू आर गोइंग टू यूज द सेम एग्जांपल बट इन डिफरेंट वे, थोड़ा सा हम लेंगे, गाड़ी अब चल रही है, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम सेंस, वी आर गोइंग टू यूज जो टाइम इंटरवल है, अगर यू आर शाइनिंग द लाइट यहाँ से टॉर्च, तो आप कितना टाइम लगेगा वहाँ से वापस गाड़ी मूव करके रेस्ट कर रही गाड़ी में हुआ, ठीक है, it will take twice the distance, but for the observer who is moving, who is on the ground, अगर एक गाड़ी अवे कर रही है और टूवर्ड्स कर रही है, अगर अवे कर रही है you have to add some factor, अगर टूवर्ड्स कर रही है you have to subtract that factor, ठीक है, फिर आप करते हैं upstream downstream, that will, so उससे आप रजिस्टर करोगे अपना इवेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस particular, अगर आप एड्रेस गाड़ी में, तो इवेंट विल बी सिंपली डेल्टा टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा एक्स बाय सी, ठीक है, सो दिस एंड फॉर द इवेंट फॉरवर्ड मोशन के लिए इट्स मूव फॉरवर्ड, इट विल बी डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड if it's come towards you, so you have to subtract this. Okay, so it's coming closer to you. It's coming move away from you. Okay, so that's so delta t किसके बराबर है बच्चों? So delta t is equal to root of 1 plus v square by 6 delta d dash divided so delta t t dash है x minus delta x by c minus b, हो सकता है delta t is equal to चलिए डेल्टा टी ठीक है, ठीक है, so delta t1 is equal to delta x plus v delta t1, सर ये delta t1 सेम है, हाँ ठीक है, which plus which minus which plus which minus delta t1 is equal to this, delta t2 is equal to this, so from this you can have this delta this t इसको कैसे आप कर सकते हैं इसको, आई जस्ट गिव इट, अब इसमें आप एक काम करो, आप सॉल्विंग फॉर डेल्टा t1 डेल्टा t2, आपको इसको ऐड
and then subtract from this delta T delta T, and you simplify these two equations. Okay, you will get this delta T1 is equal to this delta T2 is equal to 2 seconds. I have done it. वो राउंड ट्रिप के लिए क्या है? So delta T1 is for forward and delta T2 is for backwards. it's the total time. T1 plus delta T2 is equal to it's the total time 2 delta x by c. Delta x is a distance, delta x is a distance. C is velocity. Just right. Okay. You can also write it like this. ये है डेल्टा टी बाई डेल्टा टी प्राइम हमने किया था ना डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी. So we are going to use the same thing here. Delta in terms of this numerator में हमारे पास आएगा ये 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, because डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू root of 1 minus v square by c square. Now, what are you going to do? You are going to do delta t equal delta t in terms of x here. Delta t prime is equal to x t, x t. Delta t हो गया x prime c. We are going to write this interval in terms of x distance and this distance in terms of x prime distance. You are registering this event for some distance, and you are registering the same distance at time t prime. एक event distance between 2 points आप देख रहे हैं at time t. एक distance आप देख रहे हैं at time t prime. So the way I said कि clocks, two measurement of two clocks, moving clocks will run slower. ठीक है? So delta t will be lesser than delta t prime. Now what you are going to see, you are going to see the measurement of distance for an observer at time t and for an observer at time t prime. ठीक है? That's at 2. So what you will see? So what is for given x? So from this you can say you can find that delta x prime x by c आएगा, x by c आएगा, c कट जाएगा. So delta x prime is equal to 1 minus v square by c square. यहाँ से अगेन वहाँ से जहाँ से from the thing that the moon clocks move slower, you can say the length get contracted. Our measurement of length is reduced by this factor. Is called Lorentz factor. Lorentz factor. We know this Lorentz factor. Historically, अगर आप बुक्स में पढ़ोगे for different reasons. उसने कहा कि we had the idea of imponderable ether as an absolute reference, क्योंकि ether को नहीं देखा गया, मगर जहाँ से कह रहे थे moving bodies की length contract हो, तो उसने कहा कि जब हम पहाड़ पे जाएंगे things should get contracted by this factor. मगर उसका reason उसके पास नहीं था. उसने कहा चलो ये फैक्टर अगर हम यूज करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में क्या मेजर थिंग्स, बट उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ से नहीं निकला था ईथर फील्ड की सब. बट इन रिलेटिविटी वी कैन हैव द एक्सप्लेनेशन डायरेक्शन फैक्टर्स को कहते हैं. ठीक है, व्हिच वी हैव टू इन्वोक फॉर मेजरमेंट्स फॉर एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट. उसकी जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ कुछ होगी एक्स, बट इन द सेम बॉडी इज मूविंग. ठीक है, so we have to just remove the factor of this so that अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी. What I will measure and what you person will measure, they will be two different things. So if you remove this correction factor, they will sort of different. So Lorentz transformation is such a कि दो रेफरेंस फ्रेम्स, एक रेस्ट पे है एक मूविंग
or two reference frames which are in relative motion, if they have to agree on or not lead to contradiction, how we have to modify the Galilean law? Galilean addition को modify करते हुए या our how we understand time को हम कैसे understand करते हैं? Time, understanding of time in Newtonian mechanics, where the clock measurement of time is same everywhere, every part of the universe, and time is flowing equally. But once we come to relativity, the measurement of time depends upon from where you are located. If you are at rest, so you have to measurement time event ko before and after register. If you are in motion, or the clock will be synchronized to जब आप मूव करोगे उस वक्त की क्लॉक और मूविंग क्लॉक एट द एंड वो आपको वो करना है मेजर, इसमें ये करना है मेजर, ठीक है? तो इट्स अ बिट सटलर आइडिया, थोड़ा इसको थोड़ा सा सीव डाउन और सेटल डाउन करने थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो इन द सेम वे आपने पढ़ा इसमें बुक में आप एक और है समथिंग कॉल्ड बर्न एंड एटलीस्ट रीड इट, लैडर पैराडॉक्स। अगर कोई आप गाँव में है जब रखते हैं ना कोई जहाँ स्टोर रखते हैं चावल रखते हैं स्टोर, वो कहता है कोई अपनी बेटी को इसी काम में लैडर है ना, बट द लैडर है, लैडर की लेंथ है इट्स शॉर्टर देन it's longer than that of the store inside where grains are stored. अब वो कह रहा है but if the girl comes and she moves, वो कह रहा है if she moves relativistic, the ladder will get shrunk. Moving clocks की length जो होती है, moving length will get contracted when body is bent, so ladder will contract हो जाएगी. So from relativistic understanding, I should enter into this that. Store. For farmer's perspective, वो नहीं कर पाएगा. So you read it. It's an interesting example. या आप जो मूवीज में अक्सर आता है ना, टाइम ऊपर जाता है, टाइम क्लॉक में आता है, स्टार मूवीज में होता है. देखिए, you have not seen, leave it that way. But you should, the idea is more subtle. Subtle idea क्या है? You should switch off. और की visualization and stop जोड़ क्या है? Moon blocks, blocks, दूसरा क्या है? कौन सी लेंथ? I'll use the words of book. हाँ, moving objects are short. Moving objects are short. So moving objects are short. We are studying relativity in the context of this thing, but if you want to study it further, the rest of the book, it's also good. Okay. If you are interested in more, but this is